बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर ट्रायंगल्स की कुछ टॉपिक्स के बारे में। यू आर फेमिलियर विद ट्रायंगल्स, मैनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस। इन क्लास 9th you have studied congruence of triangles in detail. Recall that two figures are said to be congruent if they have the same shape and the same size. In this chapter, we shall study about those figures which have the same shape but not necessarily the same size. Two figures having the same shape and not necessarily the same size are called similar figures. तो similar figures किसे कहते हैं? Similar two figures having the same shape and not necessarily the same size are called similar figures। तो ऐसे दो फिगर्स जिनके पास सेम शेप होती है और सेम साइज नहीं होता है तो उनको बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। In particular, we shall discuss the similarity of triangles and apply the knowledge in giving a simple proof of Pythagoras theorem learned earlier. Can you guess how heights of mountains, say mountain Everest, or distances of some long distant object, say moon, have been found? Do you think these have been measured directly with the help of images of? In fact, all these heights and distances have been found out using the idea of indirect measurement, which is based on the principle of similarity of the figures. तो इस तरह से है, it is so easy to measure the height of the mountain. इसी तरह से वाह वाह, soon I will reach the moon. In class 9th, you have seen that all circles with the same radii are congruent. All squares with the same side length are congruent, and all equilateral rectangles with the same side length are congruent. तो देखिए, इसी तरह से ये दो सर्कल्स हैं और इनकी लेंथ आर है, तो ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह से स्क्वायर जिनकी साइड सेम होगी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनकी साइड क्या है? इक्वल है। नाउ कंसीडर एनी टू और मोर सर्कल्स, आर दे कॉन्ग्रुएंट? सिंस ऑल
of them do not have the same radius, they are not congruent to each other. Note that some are congruent and some are not, but all of them have the same shape, so they all are what we call similar. Two similar figures have the same shape but not the same size. Therefore, all circles are similar. What about two or more squares or two or more equilateral triangles? As observed in the case of circles, here also all squares are similar, all equilateral triangles are similar. तो इस तरह से हमने दो स्क्वायर बनाए हैं, तो ये क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर होंगे। भला इनकी कि जो रेडियस है बोला वो सिमिलर सर्कल होंगे। इसी तरह से ये दोनों क्या सिमिलर होंगे स्क्वायर। इसी तरह से ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो फ्रॉम द अबव वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, इसमें ये भी देखना होता है जैसे कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो ये सिमिलर भी होंगे और कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। तो सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ऑल congruent figures are congruent figures are said to similar but the similar figures need not be congruent. तो सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर्स जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो। Can a circle and a square be similar? Can a triangle and a square be similar? These questions can be answered by just looking at the figure. Eventually, these figures are not same. तो इसमें कह रहे हैं एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, तो ये क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो इसका आंसर ये सिमिलर नहीं होंगे। Eventually, these figures are not similar. What can you say about the quadrilateral ABCD? ABCD and PQRS are the similar. These figures appear to be similar, but we cannot be
certain about it. Therefore, we must have some definition of similarity of figures, and based on this definition, some rules to decide whether the two figures are similar or not. For this, let us look at the photograph. इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हो, you will at once say that they are the photographs of the same monument but are in different sizes. Would you say that these photographs are similar? Yes, they are. तो ये similar तो हैं. What can you say about the photographs of the same size of the same person, one at the age of 10 years and the other at the age of 40 years? Are these photographs similar? These photographs are of the same size, but certainly they are not of the same size, so they are not similar. तो अगर एक आदमी फ़ोटो खिंचवाता है अपना 10 ईयर्स और फिर बाद में 40 ईयर्स पर देखता है, तो उसके फोटोग्राफ्स तो सेम साइज़ के होंगे, लेकिन वो सेम शेप के नहीं होंगे. तो वे तो सिमिलर नहीं होंगे. What does the photographer do when the prints photographs are different sizes from the same negative? You must have heard about the same stamp size, passport size, and postcard size photographs. She generally takes a photograph on a small size film, say of 35 mm size, and then enlarge it into a bigger size, say 45 mm or 55 mm. Thus, we have consider any line segment in the smaller photograph figure. Its corresponding line segment in the bigger photograph figure will be 45 by 35 or 55 by 35 of that the line segment. This really means that every line segment of the smaller photograph is enlarged, increase in the ratio 35 ratio 45 or 35 ratio 55. It can also be said that every line segment of the bigger photograph is reduced, decrease in the ratio 45 ratio 35 or 55 ratio 35. Further, if you consider the inclination or angles between any pair of corresponding line segments in the two photographs in different sizes, you shall see that these inclination or angles are always equal. This is the essence of the similarity of two figures, and in particular of the two polygons. We have two polygons of the same number of sides. Two polygons. Two polygons of the same number of sides are similar if first their corresponding angles are equal and second their corresponding sides are in the
same ratio or proportion. तो ऐसे पॉलीगन्स जिनकी क्या है साइड से इक्वल हैं तो वे सिमिलर होंगे। कब होंगे? यार उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हों, इक्वल हों। सेकंड, दिए करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हों, इन द सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन में हों। Note that same ratio of the corresponding sides is referred to as the scale factor or the representative factor for the polygon. You must have heard that word maps, addressed global maps, and blueprints for the construction of a building are prepared using a situate scale factor and observing certain conventions. अब आता है स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर सेम रेशियो ऑफ द corresponding sides is referred to as the scale factor or the representative factor. Representative factor fraction for the polygons तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का सेम रेशियो किसका हुआ होता है? स्केल फैक्टर या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। In order to understand the similarity of the figures are clearly, let us perform the following activity. तो इसमें एक्टिविटी है, एक्टिविटी फर्स्ट है, प्लेस ए लाइटेड बल्ब एट ए पॉइंट ओ। यहाँ पे बल्ब रख दिया है ऑन द सीलिंग एंड डायरेक्टली बेलो इट ए टेबल इन योर क्लासरूम। लेटस कट ए पॉलीगन से कोऑर्डिनेट ए बी सी डी from a plain cardboard and place this cardboard pallet to the ground between the lighted bulb and the table. Then a shadow of ABCD is cast on the table. Mark the outline of the shadow A dash, B dash, C dash, D dash. Note that the coordinate A dash, B dash, C dash is an alignment or magnification of the quadrilateral ABC. This is because of the property of the light that light propagates in a straight line. You may also note that A dash lies on a OA.
B dash line on OB and C dash line OC and D dash line OD. This quadrilateral A dash B dash C dash and ABCD are of the same shape but of different size. So quadrilateral A dash B dash C dash is similar to quadrilateral ABCD. We can also say that quadrilateral ABCD is similar to the quadrilateral A dash B dash C dash D dash. Here you can also note that vertex A correspond to vertex A, vertex B dash correspond to vertex B, vertex C dash correspond to vertex D, and vertex D dash correspond to vertex D. Similarly, these correspondences are represented as A dash tends to A, B dash tends to B, C dash tends to C, and D dash tends to D. By actually measuring the angles and the sides of the two quadrilaterals, you may verify that angle A is equal to angle A dash, angle B is equal to angle B dash, angle C is equal to angle C dash, angle D is equal to angle D dash, and AB upon A dash B dash is equal to BC upon B dash C dash, CD upon C dash, D dash upon D upon D dash. This again emphasizes that two polygons of the same number of sides are similar if all the corresponding angles are equal and the corresponding sides are in the same ratio of proportion. तो ऐसे पॉलीगॉन जिनकी साइड्स की जो नंबर है वो इक्वल है तो उनको हम सिमिलर कहेंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो या उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो हो यानी प्रोपोर्शन में हो। यहाँ देखिए फ्रॉम द अबव यू कैन इजीली सी दैट ABCD एंड PQRS आर सिमिलर। ABCD एंगल 105 डिग्री है, इसमें 100 डिग्री है, इसमें 70 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसमें देखिए 105, 100, 70 और 85। तो ये जब एंगल्स क्या होंगे इक्वल होते हैं तो क्या होती है सिमिलर होते हैं। You can verify that if one polygon is similar to another polygon and this second polygon is similar to third polygon, then the first polygon is similar to the third one. अगर किसी एक पॉलीगॉन दूसरे पॉलीगॉन के क्या सिमिलर है और फिर दूसरा पॉलीगॉन तीसरे पॉलीगॉन के सिमिलर है तो वे फर्स्ट पॉलीगॉन किसके थर्ड पॉलीगॉन के सिमिलर होगा। You may note that in the two quadrilateral A square and the rectangle of figure corresponding angles are equal but their corresponding sides are in the same ratio। तो यहाँ पे इक्वल corresponding angles इक्वल है, फिर 90 डिग्री है लेकिन corresponding sides क्या है सेम रेशियो में नहीं है। सो दैट टू quadrilaterals आर नॉट, तो इसलिए दो quadrilateral क्या होंगे सिमिलर नहीं होंगे। Similarly, you may note that in the two quadrilateral A square and the rhombus corresponding sides are in the same ratio but their corresponding angles are not equal। Again the two polygons are not equal। अगर किसी को दो क्वाड्रिलेटरल हो या स्क्वायर या रोम्बस हो तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड उनकी सेम रेशियो है लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है तो फिर दो पॉलीगॉन्स क्या होंगे सिमिलर नहीं होंगे। तो इस तरह से देखिए ABCD एक रोम्बस है, इसकी 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर इसकी साइड है। इसमें 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें एंगल्स क्या है आपस में इक्वल नहीं है अतः ये सिमिलर फिगर नहीं है। Thus either of the above two conditions, first and second of the similarity of two polygons is not sufficient for them to be similar। तो ये फर्स्ट और सेकंड जो सिमिलरिटी की कंडीशन है वो वेरीफाई नहीं हो रही है, इसलिए दोनों फिगर्स क्या नहीं होंगे सिमिलर नहीं होंगे।